Hello everyone. So can you see me live? Kindly let me know. I think yes, I am live, right? So I'm Dr. Sonal Parihar and today's session is on MCQs जो कि परसों होना था बट परसों मेरे यहाँ घर में पूरे जोधपुर में वेयर आई लिव पूरा इंटरनेट डाउन हो गया था सो आई कुड नॉट वर्क बिकॉज वाईफाई था ही नहीं. Okay, so I'm Dr. Sonal Parihar. I'm your obs and gynae tutor on Unacademy. So I am a YouTuber. As you know, मेरा Ask Your Gynecologist एक बहुत पुराना चैनल है जो कि 3.5 साल से चल रहा है. साथ ही में आई ऑल्सो टीच ऑन डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स. ठीक है, दैट इज माई अनदर यूट्यूब चैनल जिसमें कि आप चाहें तो जाके देख सकते हैं. आई की पोस्टिंग बहुत रेगुलर तो नहीं बट फिर भी कुछ ना कुछ क्लिनिकल में डालती रहती हूँ. ठीक है, एंड देन आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 20 years बिकॉज मेरे को 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए. एंड देन आई हैव अ हॉस्पिटल इन जोधपुर. मेरा खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है. एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ, ट्रेन कॉर्पोस्कोपिस्ट हूँ. ऑलराइट, नाउ इफ यू आर गोइंग टू परचेज अनअकैडमी, आपको मेरा कोड यूज करना है. कोड यूज करने से आपको क्या फायदा होगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. सो दैट्स माई कोड डॉक्टर सोनल. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं कई बार बता चुकी हूँ. आप किसी भी डिवाइस पे बैठ के इसको सुन सकते हैं और सारा अनअकैडमी का मटेरियल इंक्लूडिंग ऑल द 19 ट्यूटर्स जो इस पे हैं जो आपको नीट पीजी और एफएमजी की तैयारी करा रहे हैं. आइकॉनिक में भी आपको मेरा कोड डालना है, दैट इज डॉक्टर सोनल, एंड यू गेट प्री पैडलर अलॉन्ग विद इट. अगर आप ऑलरेडी प्री पैडलर खरीद चुके हैं तो फिर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो. अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप आइकॉनिक ले लो. आइकॉनिक के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए. अगर 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद एग्जाम में तो फिर आइकॉनिक मत लो. दिस नो पॉइंट, क्योंकि इतना सारा मटेरियल कैसे पढ़ोगे. देन दिस इज द फ्री वीक टेस्ट कैलेंडर ऑफ मार्च जो कि ओवर हो चुका है. 31 मार्च तक इतने सारे अलग अलग टेस्ट हुए थे अनअकैडमी में और ये इस तरह की सीरीज लाते रहते हैं जो कि आती रहेगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लॉन्च हो चुका है. इसको अगर आपको खरीदना है तो 2 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. लास्ट 3 years के पेपर्स रिलीज हो चुके हैं. ठीक है, देन कमिंग टू द लाइट सब्सक्रिप्शन, आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज जो बच्चे एकदम अभी एग्जाम देने वाले हैं जिनके पास खूब सारी थ्योरी है और थ्योरी पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, अब उनको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए. क्योंकि एमसीक्यू उसकी रीजनिंग और उसके अंडरस्टैंडिंग से ही आपकी 75-80% थ्योरी कवर हो जाती है. सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस लाइट सब्सक्रिप्शन. लाइट यानी कि नो थ्योरी, ओनली एमसीक्यूज, एंड लाइट मतलब कि चार्जेस भी बहुत कम है. ठीक है, देन ईयर एंड सेल ये खत्म हो चुकी है. 28 से 31 मार्च तक की थी. अगर आपने इसको अवेल करा हो तो ये रेट चल रहा था. अभी वापस से क्या रेट्स हैं आपको इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये रेट्स चेंज होते रहते हैं. बट ये जो सेल थी इसको मैंने कई बार बताया, ले लो ले लो, हो सकता है कुछ लोगों ने ले लियो. सो दैट इज द हेल्पलाइन नंबर 8585858585. दिस इज फॉर द यंग बडिंग डॉक्टर्स जो कि फर्स्ट ईयर में है. एनाटमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी ये भी लॉन्च हो चुका है. कॉल करिए, आपको इसका भी फायदा मिलेगा. डाउट क्लैरिफिकेशन सीरीज इज स्टार्टिंग ऑन द 6 अप्रैल. तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेट मी जस्ट इरेज दिस क्योंकि ये 6 पे आ गया है. तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्वियसली आपको वेयर इज द इरेजर. ओके, एनीवे दिस इज 6 अप्रैल. ओके, सो 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म ओनली क्योंकि अभी प्लस क्लासेस चल रही हैं, क्लासरूम क्लासेस चल रही हैं जो कि पेड वो है, पेड क्लासेस हैं और आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा. तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसके डाउट क्लैरिफिकेशन 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा. प्लस बता दिया आपको, आइकॉनिक बता दिया. कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीज टॉपर्स क्योंकि एफएमजी और आईएनआईसीटी और नीट को हम कवर करते हैं. सो दीज वर लास्ट ईयर टॉपर्स. स्पेशल क्लास जो मैं इवनिंग में लेती हूँ वो बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होती है. इंक्लूडिंग द प्लस क्लास इज ऑल्सो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. वेरी इंटरेक्टिव. वी डू पॉलिंग सेशंस, वी डू इंटरेक्टिव सेशंस एंड यू कैन रेज योर हैंड टू टॉक टू मी. ठीक है, तो आज शाम को स्पेशल क्लास है 7 बजे, 7 से 8 के बीच में, और आज सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे हम. एमसीक्यूज जो फाइब्रॉइड के रह जाएंगे वो करेंगे और साथ में जो हमारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हमने पढ़ा था, अभी कल पढ़ा था प्लस क्लास में, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ नीट पीजी का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये 1.5 महीने का है, 30 मार्च से 15 मई तक, जिसमें आपके सारे फेवरेट ट्यूटर्स हैं, उनके सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड, सारे टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल है. और अगर एफएमजी का लेना है तो ये भी 2 महीने का है. वो 1.5 महीने का है क्योंकि 21 मई को एग्जाम है. ये 2 महीने का, इसमें भी आपको सारे अपने फेवरेट ट्यूटर्स मिलेंगे विद ऑल द एग्जाम्स एंड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये हो गया. Now coming to the questions. Now let me just open the live chat. All right, so let me know the answer of this question. You can write question number 1 and then you can write the answer. क्योंकि ये सिर्फ आधे घंटे का सेशन है तो शायद हम 5 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. ओके, it depends upon your speed guys. All right, give me the answer. ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि कितने टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं. आई टोल्ड यू 0 से लेके 7 तक होते हैं. 8 इज द अदर्स. अदर्स मीन्स द आउट ऑफ द यूट्रस, एक्स्ट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स. बताइए, एंड दिस इज अ फीगो क्लासिफिकेशन. टेल मी द आंसर.
एनी आंसर्स? एक्चुअली लास्ट टाइम भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप लोगों के आंसर्स मुझे दिख नहीं रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं इस बार भी आपको आंसर्स नहीं दिख, मेरे को आंसर्स नहीं दिख रहे आपके, बिकॉज आई कांट सी द आंसर्स यार अभी तक किसी ने तो आंसर किया होता। नहीं आता, या फिर अगर आंसर मुझे नहीं दिख रहा है, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम ना कि मैडम हम आंसर दे रहे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहे इज इट लाइक दैट? वन ऑफ यू कैन एक्चुअली, इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन टेलीग्राम, डॉक्टर सोनल्स के नाम से ही है, डॉक्टर सोनल परिहार के नाम से इनफैक्ट, बिकॉज नीट पीजी और एफएमजी करके तो पता नहीं कितने सारे टेलीग्राम चैनल है, इससे मैंने नाम चेंज करा है उसका। सो कैन यू प्लीज आंसर? Okay, yeah, I'm getting the answers. Soumya A, Sahil A, that is not the right answer. So that's the uterus. If a fibroid is totally inside, and if a fibroid is kind of, that is a wall, okay, that is a myometrium. So what they are asking is, what is this fibroid? ये वाला क्या है? What is this type? Now tell me. It is from 0 till 8, okay? 8 वाला 0 to 7 होते हैं इंट्रायूट्राइन या फिर यूट्राइन, और 8th होता है 8 इज एक्स्ट्रा यूट्राइन। ओके, यस, दैट इज बी, इट इज टाइप 1। ओके, दिस इज टाइप 0 जो मैंने बनाया है, दिस इज टाइप 1, एंड टाइप 3 क्या होगा? लाइक दिस, मोर देन 50% इन द myometrium। ओके, नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड्स टू फाइब्रॉइड एक्सेप्ट, क्या चीज इसमें गलत है? Yes, Ashutosh, you are right. Dr. Giri, you are right. All are true except, give me the answer, guys. Okay, anybody else? Ashutosh is saying, can you please write the answer, question number N2 or just 2? Question number 2. Akshay is saying C. Okay. Sahil D. So maximum are saying D. It's a very controversial question. हमने परसों पढ़ा था फाइब्रॉइड्स को in the special class, and again that was like some people were getting confused. So I just told them how to attempt the question, okay? Because again it is a very controversial question. Okay, so everybody is saying D. Actual answer is OCPs can increase the chances of fibroid in premenopausal females. See, OCPs have no relation with the size of the fibroid. So it is neither low risk nor high risk. It is just used to manage the bleeding, the endometrial hyperplasia which the fibroid causes. तो फाइब्रोइड की वजह से जो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया बढ़ता है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, OCPs उसको कंट्रोल करते हैं। सो कोई ना ये हाई रिस्क है ना ये लो रिस्क है। इट इज़ रिटन इन द हाई रिस्क ऑल्सो, इट इज़ रिटन इन द लो रिस्क ऑल्सो। हाई रिस्क में मे बी प्लस माइनस, वी डोंट नो, बिकॉज इट हैज ईस्ट्रोजन, बट देन इट डिपेंड्स कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो आप साथ में दे रहे हैं तो क्यों ग्रो करेगा। इट इज गोइंग टू शट डाउन द साइकिल, सो इट इज ओनली यूज फॉर मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी, एंड मोस्ट फाइब्रॉइड्स डू नॉट इंक्रीज इन साइज। ये सही है, जनरली सारे इंक्रीज नहीं करते, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो व्हेन इट कम्स लाइक मोस्ट, जनरली, सो दिस इज जनरली अ गुड आंसर। ठीक है, मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर ये होता है ना, ऑल फाइब्रॉइड्स इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑल फाइब्रॉइड्स डू नॉट इंक्रीज इन साइज, तो ये गलत हो जाता। देयर इज नथिंग ऑल और नन इन मेडिकल साइंस, इट इज जनरली, मोस्टली, ओकेजनली। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनको टिक कर दिया करो, ये राइट है। ठीक है, सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। ऑल राइट, यस दीप्ति, इट इज सी, and yeah, most of you are getting confused in D. Okay, broad ligament fibroid is related to what? You remember broad ligament fibroid कैसा होता है? broad ligament, अगर ये uterus है, till I get your answers and let me just draw. So that's the broad ligament here, that's the broad ligament. तो एक फाइब्रॉइड यहाँ से आ रहा है, that is a pseudo broad ligament, और एक एक्चुअली यहीं ग्रो कर रहा है। तो बीच में क्या होता है? what is it related to? 3 का आंसर बोलो, 3। Okay, we have one answer. Yes, okay, so we have 3 answers and everybody is saying C. This is a pseudo
broad ligament fibroid, this is a true broad ligament fibroid with no connection with the uterus. और यूरेटर यहाँ से हमको पता है यहाँ से आके यूरेटर टनल में घुसता है, सो दैट्स द यूरेटर. सो अगर सूडो है तो इट लाइज मीडियल टू द यूरेटर एंड इट हैज़ अ कैप्सूल, अ सूडो कैप्सूल. और अगर लैटरल है तो इट इज लाइंग लैटरल टू द यूरेटर एंड इट हैज़ नो सूडो कैप्सूल. ओके. मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड, मोस्टली किस सिम्टम के साथ फाइब्रॉइड प्रेजेंट करता है? 4. क्वेश्चन नंबर 4. गाइस हम इसको शाम को स्पेशल क्लास में कंटिन्यू करेंगे. 7 to 8 स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी. उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी एंड इट्स अ फ्री क्लास. यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड, डॉक्टर सोनल कोड यूज करके आप उसमें घुस सकते हैं. ठीक है. तो वी विल कंटिन्यू दीज एंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन के एमसीक्यूज ही करेंगे आज. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4. Okay, everybody is saying A and that is right because of the increased surface area. Increased surface area, endometrial hyperplasia होता है, जिस वजह से मेनोरेजिया तो होता ही है. मेट्रोरेजिया किस में होता है, किस टाइप के फाइब्रॉइड में? सब म्यूकस फाइब्रॉइड में, जो अंदर लटक गया है. तो जो अंदर जो हैंग कर रहा है उसका नीचे जो बेस है वो नेक्रोटिक हो जाता है. इट डजंट गेट द ब्लड सप्लाई प्रॉपरली एंड वीनस एंगोजमेंट की वजह से वहाँ पर डिक्यूबिटिस, अल्सर एंड अल्सरेशन की वजह से मेट्रोरेजिया होता है. एंड डिस्मेनोरिया अगेन मोर इन सबम्यूकस फाइब्रॉइड. सो मोस्ट सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड इज द सबम्यूकस फाइब्रॉइड, टाइप 0 एंड टाइप 1. ओके. यूरिनरी सिम्टम्स तब होंगे जब एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड होगा, जब वो यूरिनरी ब्लैडर पे इम्पिंज करेगा, या फिर पोस्टीरियर वॉल होगा, वो यूट्रस को पीछे खींचेगा तो फिर उसकी वजह से जो यूट्रोसाइकल लिगामेंट है वो भी खींच जाएगा और यूरेथ्रा भी खींच जाएगा, तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है. ठीक है. सो मेनोरेजिया इज द मोस्ट कंसिस्टेंट सिम्टम. किसी ने सी भी लिखा है. नो सिमरन, इट इज ए. Most common degeneration of the fibroid. If you remember all the degenerations that we discuss, avoid red, hot, fatty meat of chicken. So these are all the mnemonics of all the degenerations that happen. So which is the most common one? Okay, give me the answer. 5B you are saying, Sahil. Soumya is saying B. ओके यस, इट इज़ हाईलाइन. हाईलाइन होता है 65% केसेस में हाईलाइन डीजनरेशन होता है. ठीक है. रेड डीजनरेशन मोर कॉमन इन द प्रेगनेंसी. कैल्सिफिक एंड मैलिग्नेंट मोर कॉमन इन द मेनोपॉजल एज ग्रुप. कैल्सिफिक, मैलिग्नेंट. अब ये क्या है? दिस इज एट्रोफिक डीजनरेशन, दिस इज रेड डीजनरेशन. अगेन मेनोपॉजल, दिस इज रेड, this is hyaline, this is fatty, this is malignant, this is calcareous and this is cystic. और generally सारे के सारे मेनोपॉजल में होते हैं. ठीक है. so it is mainly the hyaline which is most common. ठीक है. A 40-year-old female complains of heavy menstrual and dysmenorrhea, right? On sonography, an echogenic area of 20 weeks of pregnancy is seen in the fetus. So 20 weeks of pregnancy जैसा ecogenic area है. It is not pregnancy but it is just showing you that. Where is my cursor? Okay, give me the answer. So it is showing you 20 weeks of uterus. Okay, but it is not a pregnant uterus. It is an ecogenic area which looks like a 20 weeks pregnancy. So what is the answer here? KGB. And why the other answers are wrong? There are two confusing answers. Deepti Sharma is saying B, Simran A, KGB A, Akshay A. So I told you in the question that in the theory that adenomyosis का size कभी भी 10 to 12 weeks से ज़्यादा नहीं जाता है. ठीक है. तो adenomyosis is never beyond 10 to 12 weeks. अगर 20 weeks पहुंच गया है, fibroids can be enormous, huge fibroids I have seen, this big fibroids I have seen. ठीक है. irregular uterus, ऐसे बड़े something like ऐसे fibroids हमने देखे हैं जो कि यहाँ ज़िफिस टर्नम तक आ जाते हैं. ठीक है. so the right answer is fibroid. okay. अब इसमें डिस्मेनोरिया हो रहा है because obviously it is very big, so there will be some pain also. If the surface area is big, passing lot of clots, passing lot of endometrial tissue from the cervix, that causes dysmenorrhea. Moreover, इसका कुछ component uterus के अंदर लटक रहा होगा, तो because of that it causes dysmenorrhea. All are complications of fibroid in pregnancy except कौन सा complication नहीं होता है प्रेगनेंसी में? फाइब्रॉइड की वजह से. ये भी हमने कल डिस्कस किया था. इफेक्ट्स ऑफ फाइब्रॉइड ऑन प्रेगनेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑन फाइब्रॉइड. एक्सेप्ट पूछ रहे हैं. You need to tell us the except. Okay,
Very difficult to see this cursor, it is so small. Okay. What does not happen in pregnancy? Okay, we have 2 answers, 3 answers, 4. Yeah, everybody is saying placenta previa, and that is right. PPH हो सकता है because the uterus does not retract properly, contract properly because of the fibroid. Red degeneration very common. Obstructed labor, yes, if it is the central fibroid, which is like क्या बताया था मैंने, lantern sitting on the St. Paul's. So that is the description given to a central fibroid that can cause obstructed labor. Then regarding imaging of uterine fibroids, all are correct except. Again, except. Be careful with this word except. Ultrasound is ideal to confirm the diagnosis. Saline infusion sonography is more sensitive to detect any submucous fibroid. MRI is superior to USG to identify the exact location of myoma. CT scanning is an alternative to MRI. So इसमें से क्या गलत है? बाकी तो सब सही है. Question number 8. It's a very obvious question. जो चीज़ लग रही है गलत है उसको बोलो. Ultrasound is ideal to confirm the diagnosis. Is that wrong? Because they are asking what is wrong. Okay, very good. So that is the answer. Why? Because CT scanning does not have that much resolution to decide whether it's a fibroid or adenomyosis. It is actually MRI, which is good for soft tissue differences, especially अगर उसके अंदर ये देखना है कि adenomyosis है, endometrial glands है, या फिर malignant हो रहा है. CT scan is more for lymph nodes, right? And it is for tissue delineation, it is MRI. और बाकी जैसे जो है options, MRI superior है definitely, but MRI तब करेंगे जब हमको sarcomatous stage देखना है या adenomyosis से differentiate करना है, because it's expensive. Ultrasound ideal है, that is the first foremost diagnosis we do in gynecology. SSG, that is saline salpingography, and infusion sonography, when you put saline, and HSG, that can actually detect the submucous fibroid if you don't have the facility of hysteroscopy, because इससे better hysteroscopy रहेगा, but वो option नहीं है इसमें. ठीक है. So the best answer out of exclusion is number D. All of the following are indications for myomectomy in a case of fibroid uterus except. किस केस में हम myomectomy नहीं करेंगे? Again except पूछ रहे हैं, except. Question number 9. Okay, we have one answer. Somebody has written no on 5. What do you mean by 5 no? Did you want to discuss the question number 5? Or was it this one you wanted to discuss? Anyway, let's come to number 9. So what's the answer? Everybody is saying D, and that is right, because red degeneration should not be managed with the surgery, because it is a conservative management that is required. Just analgesics. If she's feverish, अगर बुखार आ रहा है, fever आ रहा है because of the reactionary changes, because of the release of prostaglandins and all, you can give her some antibiotics, but otherwise she doesn't need antibiotics. Just IV fluids, analgesics, and you do not need to terminate the pregnancy. Just let her continue with the pregnancy. Okay. All are prerequisites for myomectomy except. Again, except. Which is not required before myomectomy. Okay, question number 10. Okay. Yes, Dr. Shri, it is analgesics. Okay, red degeneration can be very painful. It may lead to sometimes abortion itself because of the pain, because of the reactionary changes, but you do not need to terminate the pregnancy. Okay. Okay. So derm. Okay, I explained this in my theory class why husband semen analysis is required, because sometimes if the patient is not having any symptoms in the myoma and you're just treating her surgically because you think that may be the cause of infertility, you need to check husband semen analysis. Okay, so although it is not a prerequisite, very important, but it is still something that
you may consider why to do a surgery in a patient who is asymptomatic just because of infertility you are doing it, and just in case there is a problem in the husband, then you will miss that thing. So it is a prerequisite. So in this option, the textbook author says it is none of the above, because all are required. DNC a must, because you should just be careful that this is not a malignant one. Although in a clear-cut myoma, you don't actually need a biopsy, because what you're doing is you are just removing the myoma either hysteroscopically or laparoscopically or open surgery, and you send it for histopathology. But just if you are in a government setup, if you're in a proper research setup, and you can call the patient again and again, she can afford it, or if it's a free treatment, then yes, technically, theoretically, DNC report, that means a biopsy report is required. And hysterectomy consent is very important. You can sometimes end up damaging the uterine artery, cause a lot of bleeding, and then you have to take this consent. As I told you, it is very difficult to take this consent, especially in our Indian scenario, where people don't actually understand much that why these complications happen. And but in the Western world, where the patients are very, very well aware of the complications, they will sign it. Okay, so here the answer is none of the above. All are prerequisites. Okay, then coming to identify the instrument. Okay, what does it show you? It has a screw type of appearance. Okay, it looks like a screw. So that's the answer here. So that is exactly what I showed you in the exam also. In not the exam, the theory. Somebody is writing 5DD. No, the most common degeneration is not malignant transformation. The most common is hyaline. Okay, Exportin is your name, the channel name, right? The person who is typing. It is not malignant. Very, very rarely it happens. Just maybe 0.5% of the fibroids will turn malignant. So what is it? It's a myoma screw. Yes, I've already given you the hint. So if that's the uterus here and that's the big myoma, how will you remove it? That's a whirly appearance. Okay, so you put this screw here. I don't have any other color, do I? Yes, I have a black color. So what you do is you put this screw here, like this, like this, like this, and you just hold it out with this big handle, and this helps you in pulling. You can just pull it out, the traction. So you just pull it out, and that's a myoma screw, because these are very sturdy and they're big, huge screws, so they can easily push themselves inside the fibrous tissue and give you the hold. Otherwise, other instruments will not work. Okay, now identify this instrument. Okay. That channel name itself is 5. Okay, Akshay. Thank you. I was getting confused. Why again and again I'm typing the question number 5. Okay. Ma'am, make consent very strict in your hospital. Recently, suicide is very sad. Yes, I know, I know. But I just feel that why doctors should commit a suicide. I mean, why? Maybe there was something that she could not tell. I mean, why should she commit a suicide? I felt very bad. Why we have to be so weak? We can't be so weak. But then I can understand the scenario. Probably she must be suffering, the politicians and everybody getting involved. So yeah, it is very sad. But then you can't change the mentality of the people. People don't understand. Even if you take a consent of removing ovary, if it is required, they will come and fight. So that is something we have to be very careful. Okay, so it is myoma clamp, and that is right. So this looks like a clamp. Yes, it is going to clamp the uterine artery, and it has rubber. Where is my? Okay, let me get here, and then I will draw. So what is it? It is actually rubber. It has rubber here. Okay, so this thing is rubber. This is rubber, so it does not damage the tissue. If it has been just simply metal and you compress it, then you're going to just destroy that artery or maybe rupture it. So you just use a rubber clamp. It is big, it is thick, and it has a broad surface, so it does not go inside the artery. Okay, so it does not damage it. Right, it is B. Then all of the following measures reduce bleeding during myomectomy, except which one will not reduce the bleeding before surgery? Preoperative correction of anemia, preoperative OCPs, ligation of the pedicle, GnRH analogs, and local injection of vasoconstrictive agents like vasopressin. Okay, this was discussed in the chapter when we did the theory class. Yes, Dr. Shri, I know that is the scenario we are facing in India. By 25, they finish their reproductive life because they already have 4 or 5 children and they come for ligation.
and they look like 40-year-old because the reproduction starts from the age of 16, 17. I know. 5, okay, Exportin 5. Now you know, I know that it is 5, your channel name. Ma'am, Exportin 5 is using in microRNA, so that's why my name. Sorry, you are confusing. Okay. Yes, okay. So 13, it is A, Akshay. Actually, it's a controversial question because the book says something else, and I think there should be two correct answers here. Book has already, the author has only ticked one answer, but I would tick two. Okay, everybody's saying A. See, pre-operative OCPs do not do anything with the fibroid size. So actually, I think that is also a right answer. But according to me, pre-operative correction of anemia, how is it going to reduce the bleeding? I don't understand. It is going to correct the ferritin store, and probably if the patient is going to bleed, that is just going to decrease her morbidity if you give her blood before surgery. Okay, but they have ticked pre-operative OCPs because what they want to highlight is that the OCPs have no role in reducing or increasing the fibroid size. It is only going to reduce the bleeding because it stops, or you can say reduces, endometrial hyperplasia by shutting down the entire HPO axis. Okay, so pre-operative correction of anemia is like they should have just written prerequisites during myomectomy or before myomectomy. So that's a kind of dubious question. Now, a 36-year-old female presents with heavy menstrual bleeding. She has one child of 7 years. So she has a child, 36-year-old she is, heavy menstrual bleeding. Sonography shows 3 by 3 centimeters submucosal fibroid. Hemoglobin is 10.5. What is the best treatment for her? Okay, so it's a small 3 centimeter fibroid hanging inside. She already has one child and she's young. Not very young also, but she's still young. Okay, so what will you do? Yes, Dr. Shri, it reduces HPO. So question number 14, let's have the answer because we already have finished 26 minutes. So I am just going to do half an hour because I've been allotted half an hour today. Okay. And the rest of it we will do in the evening in the special class. So do join the special class. So Staphylococcus is also a channel name. I can't imagine what kind of names people are using. Okay. Right answer, please. I'm not getting the right answer. Okay, few of you are actually answering. Less than 40, we are going for hysteroscopic. Why not Exportin? Why not? Hysteroscopic myomectomy is the best and safest procedure right now because it is less than 5 centimeter. It is totally submucous. The high hemoglobin is also borderline. So why do you need to go through the laparoscopy and open the abdomen? Why? It is hanging inside. You won't be able to remove the fibroid laparoscopically. For laparoscopic fibroid, it has to be here. It has to be here. How will you remove this one? You have to go inside the uterus, right? If you go laparoscopically, you will have to cut the uterus from here, open the cavity and then remove it. So you're creating more complications. This patient, if she conceives later, might end up in rupture uterus because you have cut the entire wall and opened the cavity. So just go hysteroscopically and shave it off. Okay, so it is an ideal candidate for hysteroscopic myomectomy. Yes, Exportin. All right. 42-year-old female presents with heavy menstrual bleeding. She has one child. So now again the question has been changed. One child again, 7-year-old, and she's 42. So she's perimenopausal now. Uterus is enlarged to 24 weeks with multiple fibroids. Very clear-cut answer. Hemoglobin is 9. So she's anemic also. She has only one child. She may want to conceive, but she's 45. What would you do now? Why did she not conceive in the last 7 years? Probably she was not able to or she was not willing to. But now she has a huge fibroid. So what is the answer? Okay, anybody? Okay, everybody is saying C. Why? Yes, it is D. Why will you remove ovaries? Why will you castrate her? Don't remove her ovaries. She needs the estrogen, right? She's not 55 or 60. Why to remove ovaries? Do not remove ovaries. Do not do BSO, that is bilateral salpingo-oophorectomy, before 50 years of age. Okay, in fact many surgeons would not do it up till 55 because that is the ideal age of menopause these days. 40 to 55 is the ideal age of menopause, and after 55, if she doesn't have menopause, that is late menopause, and then you have to evaluate. So at least less than 40, give her the benefit of this estrogen. Okay, so don't do BSO, just do a TAH. All right, do we have time for another question? Yes. Okay, last question, guys.
Identify the fibroid based on the FIGO classification. Okay, so let me just draw it for you till you answer. So you have to identify these grades. I'm just drawing them, grading, 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 grading. These are all the grades that we have discussed. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so what is this fibroid actually showing you? Tell me. What is this fibroid showing you? This will be 0, this will be 1, this will be 2, this will be 3, and this will be 4, and this is actually 5. Yes, you are right, it is 5. Why? Because yes, it is 5 because it has more than 50% in the intramural component. So this one is the actual fibroid that they have shown. That is this one. Okay, number 5. More than 50% intramural, and some part of it is coming out. Although the figure is not very clear, but you can see some part of it is actually coming out of the uterus. That is type 5. So you have to draw it and you have to remember all this. Okay, so that's it, guys. We will continue this in the evening, and thank you for joining. Thank you for the lovely interaction that you all are giving, and we'll see you again. We'll meet again in the special class at 7 p.m. today, and we'll do more MCQs on fibroids, myomectomy, and abnormal menstruation. Okay, thank you.